and send the answers to me on WhatsApp. Okay.
Yeah, Sarah, first one is correct. Second one is correct. Third one is also correct. Fourth one is fine. Fifth one, correct. Sixth one is also correct. Very good, Sarah. I'm waiting for others. Please send the answers. Fatima, your second answer is wrong. Third answer, sorry. First one is, second answer is wrong. Third answer is wrong. Fourth is fine. Fifth is fine. Sixth is fine. देखिए क्या गलती की है आपने. फातिमा, आपने सुना ना, आपको पहला सही है. सेकंड एंड थर्ड इज रॉन्ग. Send answers, guys. One more minute. Yeah, Vakia, your first is correct, second correct, third is correct, but the way you write the products now, your bonds are not correct, Vakia. Okay, so you may lose some marks. I don't know. As you see how I have written this thing, and look how you have written this thing. It's very different. Okay. Next is fourth is fine. No, fifth is not correct. Sixth is fine. Fifth one is not correct. Vakia. Fatima, you have sent it again. No, again wrong, Fatima. Please look into your notes. We have done this question. Okay, guys. So first one is with thionyl chloride. We have done this, and the OH will be replaced by a Cl. Here, this is a Markovnikov addition. In Markovnikov addition, we add the negative part to that carbon atom which has less hydrogen. So simple SN reaction in which Br will be replaced by OH. Here, when we are reacting with KCN, we have done this question very extensively in the last lecture. We will get Cn. Br will be replaced by Cn, and in the presence of AgCN, it is replaced by Nc. When we have KNO2, it is replaced by ONO. So these are the answers. Please write this down.
Okay, let's move on. Also, write this question, by the way. We are going to discuss this question first of all. Write this down. Neopentyl halides are 1 degree alkyl halide, but still they do not undergo SN2. Explain. Okay. So for this answer, you're right. What is neopentyl halide, by the way? Neopentyl halide has a structure like this. CH3, the carbon atom, which is connected to 4 carbons. And one of these carbons is connected to halogen atom. So this whole fragment of 5 carbon atoms is known as neopentyl. Okay, this is pent 5 carbon atoms, as you can see, 4 in the corners, 1 in the center. And this is halide, so this is neopentyl halide. Now, in essence, this is 1 degree. Obviously, this is 1 degree carbon, right? Because this carbon, it is attached to only 1 carbon atom, as you can see here. This red carbon is attached to only 1 carbon atom, that's the blue carbon atom. Now, this blue carbon is further attached to 3 carbon atoms, that's another thing. But it is 1 degree halide. That means the halogen atom connected to carbon is connected to only 1 carbon atom. But it still does not go SN2 reaction because you can see there is a very big bulky group here. Okay, so please write the presence of large bulky group. What is that large bulky group? The large bulky group is CH3, carbon with CH3, another CH3. Okay, this is the large bulky group. Due to the presence of large bulky group on alpha carbon, of alkyl halide, it hinders the attack of nucleophile it hinders the attack of a nucleophile, and hence they don't undergo SN2 reactions. Done, everyone? Yes or no? Please tell me. All of you wrote this? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, let us see what reaction is by this neopentyl halide. Since it does not undergo SN2 reaction, what does it undergo? So if I have, let's suppose I have CH3, which is bonded to carbon, the neopentyl halide. And in this case, we are taking a specific halogen, that is Br. Okay, it doesn't matter which halogen we are taking. So just for the case of this example, I'm taking Br. And when I react this with aqueous KOH, this should give me an alcohol which should look like this CH3 carbon with CH3, another CH3, the CH2 as it is, everything is as it is, the Br should be replaced by OH. But we don't get this product. We don't get this product. This product was expected. The actual product that we get is something different and which looks like CH3. Then we have a carbon atom like this. This is CH3.
the CH2, and the OH atoms attaches here, and we see that one of the CH3, it shifts to the CH2 carbon here. So this is the actual product that we are getting. Now, if we get anything other than expected, we should know the mechanism for that reaction. How is this happening? And how we can see that one of the CH3, my bad, okay? So CH3, the CH3 is shifting to one place. Why is this happening here? Okay, why is this happening? So let us understand the mechanism first. Write the topic mechanism. Now, whenever I write mechanism, your head should pop up two things. Yeah, it is only about the movement of electron, and it goes from electron source, that means from electron rich site to electron sink. Okay, that means this is electron rich. Electrons move from electron rich spaces to electron poor spaces. Okay, from electron rich side to electron poor side. That should the first thing that should come whenever you are writing about a mechanism. So let us start the mechanism first of all. We have CH3, carbon, CH3, and then we have CH3, CH2, and then we have Br. Now, obviously, it is not undergoing the SN2 reaction. We have already stated that because of the bulky group. So that is why what is happening. The first step will be the formation of carbocation, is following the SN1 pathway. In SN1 pathway, we are going to get CH3, which has CH3 like this, another CH3 bond here, and there will be a carbocation form in the CH2. So this is a carbocation that we have formed, and this is 1 degree carbocation. Now let us analyze this carbocation. Now, when I analyze this carbocation, you can see that I have this carbocation, right? Let me just copy and paste this once more and deal with this individually here with some space. Okay, so we have this carbocation. Now, let us look at this carbocation with respect to its orbitals that we have here, the orbitals that we have. So I'm only emphasizing on few orbitals. We have CH3, carbon, we have CH3, another CH3 here. And this C and CH3 bond will be an orbital like this. There will be another orbital, and not drawing that orbital and just writing the CH3 here. Okay. So there will be orbital overlap like this, and this orbital will have some electrons, right? This orbital will have electron, up spin and down spin like this. I can make it large. Last is not very beautiful. Okay, so we have one electron and the other electron, and this is CH3. This is a bond with 2 electrons, and I'm just drawing the CH3 as it is here. Now further we have the CH2. Now, this carbon has 2 bonds, and the 2 bonds is with hydrogen, and it has a positive charge. That means one orbital is empty. So we'll have an empty p orbital. Okay, now it has 3 bonds. Okay, it has how many bonds? It has only 3 bonds. That is why it will be sp2 hybridized, not sp3. And carbon has 1s2, 2s2, 2p2. So it has the s orbital and the p orbital. In this p orbital, this is the ground state. If you remember some of hybridization, this is the ground state. In excited state, the same thing will be like this. So 1 electron on each of the orbital, and all of these will mix together, and they will form the sp3 hybridized orbital like this. अगर थोड़ा बहुत आप लोगों को 11th class में कुछ याद आया हो तो ठीक है, like this. But still, as you can see here, we are having a positive charge. That means there will be 1 electron less. So I am removing one of the electron from here, and now only 3 orbitals are going to participate in hybridization, which are these 3. So we have 1 s and there are 2 p. So this is sp2 hybridized, and there will be 3 orbitals sp2 hybridized like this. And then there will be one pure p orbital. As you can see, this p orbital, which is not having any electron, that is vacant here. That is the pure p orbital, and that is the pure p orbital that I have drawn here. Now, each and everything is clear till here about the orbitals and all. Please tell me, guys, where we have the electrons and which is the empty orbital. Please tell me, Ahmed, Fatima, Sarah, Wafi, and Samia. Razan, tell me, guys. Are things clear about orbital? Yes or no? Yes, sir. Yes. Okay. Now,
नहीं, यानी कि बहुत लोगों का आंसर नहीं आता, मतलब हम क्या समझे, आप लोग जवाब नहीं देते हैं तो नहीं समझ में आया, आपको समझ में आया क्या समझे हम आप? टेल मी गाइस, अहमद, सारा, फातिमा, प्लीज टेल मी गाइस. Yes, sir. Okay. Now, Yes, sir. okay, Fatima. Okay. Now, as you can see here, आप एक इस तरह से समझिए आप. यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन सोर्स है, यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है, राइट? एंड बिल्कुल यही नजदीक में आपके पास क्या है, पी ऑर्बिटल, बिल्कुल सेम ओरिएंटेशन में. ओके, एंड दिस इज वेकेंट. नाउ कैन आई से दैट इलेक्ट्रॉन कैन ट्रैवल लाइक दिस? यस और नो, टेल मी. इलेक्ट्रॉन सोर्स टू इलेक्ट्रॉन सिंक, बिकॉज ऑल्सो इट इज वेव नेचर, राइट? और उसके बाद वो छोड़िए आप, ऑल्सो इमेजिन दैट देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज हियर. So obviously electrons will be attracted towards this side. Yes or no, please tell me guys. Yes, Correct? sir. Yes. Okay. That is why what happens is, I can say it is possible. What I'm saying, I'm saying just it is possible. ठीक है, हम बस possibility की बात कर रहे हैं. I'm now removing this and I'm making a bond here. Okay. I showed you the orbital diagram to show the orientation. I'm removed that and I have drawn a bond like this. I'm saying it is possible that complete thing can move here. कभी कभी ऐसा हो सकता है. I'm still not very confident about it, so I'm just drawing a equilibrium type of thing that it can go back and forth like this. CH3. Now this, see, there is a CH3 here. The next carbon which was having CH2, it is getting a CH3 group. Now since it is getting a CH3 group, its positive charge will be vanished and we will get a positive charge rather here. Okay, we'll get a positive charge rather here. Now if I look here, this is 1 degree carbocation and this one is 3 degree carbocation. Now, if there is a 0.0001% chance that if 1 degree structure moves to 3 degree structure, it is never going to come back. Yes or no, please tell me. If any one of the 1 degree, it goes to 3 degree because it is very more stable. It is what? Highly stable. Yes, sir. So once it goes this way, like once it goes to 3 degree, it is not coming back to 1 degree again, right? So that is why this type of rearrangement is possible. And this, what we call this as carbocation rearrangement, rearrangement of carbocation. So when you have a carbocation with lesser stability and there is a possibility with movement of one step, ठीक है, एक step नहीं, ऐसा नहीं कि आपके पास यहाँ पे इस तरह से है, for example. So here you have 3 degree carbons and here you have a positive charge. ऐसा नहीं कि jump कर करके positive charge यहाँ पे पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होगा, okay? Because the first step, as you can see, it is happening because of the vicinity of the electron source and the electron sink. Electron source, that is the 3 degree carbocation, it's very near to this 3 degree carbon is very near to this carbocation. That is why that is happening. इतने दूर में आपके पास rearrangements नहीं होंगे. So this is known as 1,2, and we are shifting a methyl group. So this is known as 1,2 methyl shift. 1,2 methyl shift. 1,2 का मतलब क्या है कि adjacent carbon में methyl shift हो रहा है. Okay. And once we get 3 degree carbocation, there is no going back. There is no going back. And we have a new carbocation which looks like this, CH3 with carbon, CH3. Then we have a CH2, and then just writing the CH3 here like this. Okay, I have written it above. लेकिन अब इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं. Now we have a positive charge. The OH negative ion is there because we have used. This is the attack of nucleophile, because if you know in SN1 what happens, there are two steps: formation of carbocation and then the attack of nucleophile. So this oxygen is going to attack onto this carbon atom and CH3, carbon, CH3, CH2 and CH3, and we are going to get this OH here. Okay, so as you can see, this is the actual product, and we have also proved this through the mechanism, and we have explained why we are getting this product. So please write this down, and we'll talk a bit more about the rearrangement in carbocations. Okay, we'll talk a bit more about the rearrangement in carbocation. Now, whenever like you please, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक क्लास खत्म होती है ना, रफ कॉपी में पूरे क्लास को आप लिखिए, ठीक है? नोटबुक को पढ़िए, क्या हो रहा है खुद को एक्सप्लेन कर करके फिर से एक बार लिखिए, तभी आपको ये सारी चीजें याद रह पाएंगी.
Okay, otherwise there are so many concepts and again this is going to be used in the next chapter. तब तक आपका ठीक हो जाना चाहिए, ठीक है? जैसे अल्कोहल में आपके पास फिर ये कंसेप्ट आएगा कार्बोकेटाइन का एंड रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन. उस टाइम तक आई विल एक्सपेक्ट दैट यू शुड नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन. उसके लिए बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना. जैसे ही क्लास खत्म हुई ना, उसको आप लाइक मेक इट अ हैबिट, मेक इट अ रूल दैट क्लास, अगला क्लास अटेंड करने से पहले उस क्लास को पूरा एक बार लिख के एक बार समझे, जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, जो भी मैकेनिज्म सर लिखा रहे हैं, जो भी रेट लिखा रहे हैं, ऑर्डर लिखा रहे हैं, सब चीजों. This is not the only case in which rearrangement can happen. There are a few more cases in which rearrangement can happen. Okay, so we'll talk about those things also. And all of the rearrangement, whenever there is a carbocation form, the chance of rearrangement is always there. Okay. Let me know when you guys. Please let me know if you're done. Done? Okay. Now, right next, that is hydride shift. So this is the case of methyl shift. There can also be hydride shift. Please write. Hydride shift. Okay. Now, let us an example in which we are having similar thing, CS3. CS3, instead of CS3, we have a hydrogen here. Then we have a CH2. Let us say again Br. Okay, CH2, and then we have a Br. Now, if I look at the first step, it's going to give me CS3, carbon. So hydrogen is here as it is. CS3, CH2 positive. Okay, CH2 positive. Now, this hydrogen can shift here. This is going to give me CS3, carbon with CS3. And again, this CH2 is going to get, because it is getting one hydrogen, CS3. This will be, now this carbocation was 1 degree. This carbocation is again 3 degree. Now this is known as hydride shift because hydrogen is shifting. Again, what type of hydride shift? 1, 2 hydride shift. One comma 2 hydride shift. And further, if I am going to react this with OH negative, then I am going to get this product CH3, carbon, CH3, one more CH3, and the OH group will attach here. Now again, I mean there are debate, like you can also make a product in which like both of these product ना एक ये product बन सकता है CH3, CH, CH2OH and CH3. If it is going to be SN2, ये SN2 से ये product मिलेगा आपको और SN1 से ये product मिलेगा.
Now again, obviously this is a bit more, लेकिन दोनों ही काफी comparable amounts में होते हैं. Okay, both of them are in comparable amounts. So write all both the products. SN1 में rearrangement होता है, इस वजह से you are going to get this. But in SN2 there is no carbocation formation, no rearrangement. So directly the OH negative is going to attack like this. For SN2, the OH negatives are going to attack onto this carbon. This Br is going to leave. Nothing is going to happen. The rearrangement and all. So SN2 में ये product मिलेगा आपको, SN1 से ये product मिलेगा आपको. Okay, so this is example of hydride shift. Done everyone? Yes or no, please tell me. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Okay. Right, next is also. So could you scroll up 1 second? Sure. Done, sir. Okay. Right, next. Ring expansion. Ring expansion. Now, if I look at the organic rings, we can have starting from 3 carbon atoms. Okay, the angle here is 60 degree. Okay, then we have the next, which is cyclobutane. The angle here is आपको दिख रहा होगा 90 डिग्री, लेकिन असल में ये इसका जो 3D स्ट्रक्चर होता है ना, वो कुछ इस तरह से होता है. इट इज पकड़ टाइप ऑफ रिंग. यहाँ पे कुछ एंगल जो होता है इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, बट लेकिन फिर भी आपके पास जो आइडियल एंगल है टेट्राहेड्रल का कितना होता है? Carbon should have an angle of how much? What is the tetrahedral angle? Tell me, guys. 100 equal to 9. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि it has a lot of angle strain. ये आपका एक्चुअल होना चाहिए जो आइडियल केस है. In cyclobutane you have only 60 degrees. This is approximately equal to 95 degrees, you can say. Okay, approximately equal to 95 degrees or somewhere around 100. ठीक है. अब उसके बाद आपके पास जो 5 membered ring होता है that is 108 degrees. Cyclobutane, sorry, cyclopentane. And then we have the 6 degrees. Then we have the 6 carbon atom, and the 6 carbon atom, it has 109 degree. साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर आप लोग इस तरह से बनाते हैं, बट एक्चुअल में स्ट्रक्चर जो होता है साइक्लोहेक्सेन का वो कुछ इस तरह से होता है. ओके, सो 1 2 3 4 5 and 6, all of these are 109.5 degrees. ठीक है, तो that is why the 6 degree 6 degrees बोलते हैं. 6 carbon ring is most stable. So stability increases in this order as angle increases and it reaches the optimal level of 6 carbon atoms. 7 का भी आपका उतना stable नहीं होता है. Okay, so 7 has this type of structure. 6 सबसे ज़्यादा stable होता है. 6 is most stable because you can see that if I am going like this, it is achieving the ideal angle. Ideal angle. Okay, now that means 3 degree is less stable than 4 degree, 4 degree is less stable than 5, 5 degrees less stable than 6. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास मान लीजिए कुछ इस तरह का केस हुआ. Number 1, let us suppose that you have some ring like this and you have CH2 Br. If you are going to get a carbocation, the carbocation will look something like this. CH2 positive. ठीक है, CH2 positive. Now the first step that you have to do in the ring expansion is what actually happens is this particular bond or this bond, you can take any one of them. This breaks and it adds onto this adjacent carbon atom. ठीक है, this adds onto the adjacent carbon atom. यहाँ से इस तरह से like this, electron source to electron sink. So first of all, what I will do, I will break this bond. I've broken this bond, CH2 positive. I've broken this bond, CH2 positive. This has a negative charge, this has a positive charge. और यहाँ से इस तरह से अटैक किया है इसमें. उसके बाद make a bad figure. ठीक है, you have carbon CH2. This carbon is getting, just a second. Let me redraw this.
This is your CH2. This carbon is getting attached to this carbon atom. Okay. So now you have how many carbons? This carbon atom was having a positive charge. यहाँ से देखिए negative charge और positive charge neutralize हो जाएगा. This carbon will now have a positive charge. This carbon is now going to have a positive charge. Okay. Now you can see that if I take this as a bond, we have how many carbon atoms? Is starting from this positive charge 1, 2, 3, 4, and 5. So I can draw the structure as 5 carbon atoms, and one of the carbon atoms is going to have a positive charge like this. One of the carbon atoms is going to have a positive charge. Now, what happened here? How did we gain stability? We gain stability because we are moving from a more unstable structure of 90-degree angle to a greater angle. So 4 carbon ring is less stable than 5 carbon ring. Okay, that is why we are having, this is more stable. That is why we are having a rearrangement or ring expansion. This is less stable. Okay, let us suppose you have something like this. I'm just making the carbocation now. CH2, or rather you should have CH, and then you have a CH3 atom here with a positive charge. Okay, now please remember that all of these expansions are not happening due to the degree of carbons. Okay, it is happening due to the number of carbon atoms in the ring. This is 4-membered ring, this is 5-membered ring. So 5-membered ring is more stable. That is why this is happening. So again, the first step is to break this bond. I will break this bond, and then I will be getting a structure like this. We have CH, CH3, there is a positive charge here. Now, once we have broken this bond, there will be a positive charge here, and there will be a negative charge here. This negative charge is going to attack onto this positive charge to make a 5-membered ring from a 4-membered ring. Now, you have to make a bad picture. Bad picture means you just follow the atoms here. Don't worry how ugly the picture is looking. So we have CH, then we have CH3. Now, since this negative and positive are getting a bond, they will get a neutral charge. They will not have any charge, right? So this is a bond here, and this is going to have a positive charge. Now, again, starting from the positive charge carbon atom, 1, 2, 3, 4, and 5. I have a 5-membered ring. So I will make a 5-membered ring, and I will give a positive charge onto any one of the carbon. And this carbon is my first carbon. You can go 2, 3, 4, and 5. As you can see, the second carbon is having CH3 group. So you will just give a CH3 group to the second carbon atom. This was my second carbon atom. It is having a CH3 group. All of you understood this second one, yes or no? How to do it? Yes, sir. Okay. Please practice these things today only. ठीक है? क्लास के बाद इनको फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा. थर्ड में देखिए. CH2 positive, and I have a CH3 group here, let us suppose. Okay, I have a CH3 group here. Okay. Now what you are going to do, you are again going to break the bond like this. This bond is going to be broken. You have CH2 positive. Here you have a negative charge. Here you have positive charge because you have broken the bond. And here you have a CH3 group attached. Same thing, negative to positive. Make an ugly picture first. CH2. CH3, this is having negative charge, but again, that negative charge will be stabilized because it is getting attached to the CH2. And this carbon is going to have a positive charge. Again, numbering it 1. Starting from the positive charge, we'll number it 1, 2, 3, 4, and 5. I will make a 5-membered ring. Give a positive charge anywhere and start numbering 1, 2, 3, 4, and 5.
Now my fifth carbon is having a CH3 group, so I'm writing a CH3 group here. Write one more example. We have a CH2 positive here, and we have a CH3 group here only. Again, the first step is going to break the bond. CH2 positive. We have a CH3 group here. This is having a positive charge. This is having a negative charge. This negative is going to attack. And then we are making the ugly structure. CH2. It's going to make a bond. This is going to get a positive charge. This also has a CH3 group. So this is my first carbon atom, second, third, fourth, and fifth. And it is going to give me, this is my first carbon with a positive charge and CH3 group, second, third, fourth, and fifth. Write this down, then I will write a concluding point, okay? Done, guys? Yes or no, please tell me. Yes, sir. Done. Done. Okay. Right here, a conclusion. Achha, before conclusion, let me show you what the conclusion is. Let's start with the first shift rearrangement that we did. Now, in this case, look at this carbon atom, which is adjacent to the carbocation. If you look at this green carbon atom, it is connected to how many carbons? Please see. 1, 2, 3. And if you take this carbon also, then it is connected to 4 carbon atom. So here, when you have the carbon adjacent to carbocation is attached to 4 carbon atom. That means it is 4 degree, right? जो आपके पास adjacent carbon atom है, that is 4 degree. तो आपके पास क्या हो रहा है? You are having a methyl shift. In general, we can say that there will be an alkyl shift, usually a methyl shift when it is 4 degree. When the carbon adjacent to carbocation. Please see here, ठीक है? यहाँ पे देखिए carbon. This is the carbon which is adjacent to the carbocation. Carbocation के adjacent वाला carbon क्या है? 4 degree है. Then we are having a methyl shift. Look here. When we have, this is my carbocation. The carbon adjacent to carbocation, it is connected to 1, 2, and 3 carbon atoms. That means it is 3 degree. जब इस तरह का केस होता है, तो then we are having a hydride shift. Then we are having a hydride shift. Next, if you look at this case, whenever you get a carbocation, you see a carbocation here, and its adjacent carbon atom. See, ये carbon atom आपका यहाँ पे, ये carbon atom आपका यहाँ पे, ये carbon atom आपका यहाँ पे. All of these carbon atoms, they belong to a ring. And when they belong to a ring, there is a ring expansion. Okay, there is a ring expansion when you have 3 degree या 4 degree या 5 degree type. Sorry, 3 member, 4 member या 5 member का ring होता है, तभी आपके पास expansion होगा आगे के ring के लिए. Okay, so you are going to write conclusion. Look at the carbon adjacent to carbocation. Okay, now the carbon adjacent to carbocation can be either, ये cases हो सकते हैं उसके. Oops, my bad. It can be 1 degree. If it is 1 degree, you have to do nothing. कुछ नहीं होगा वहां पे.
सीधा आराम से प्रोडक्ट बनाइए। इफ इट इज 2 डिग्री देन ऑल्सो नथिंग, कुछ नहीं होगा। बट व्हेन इट इज 3 डिग्री then you are going to do hydride shift. When that is 4 degree, then we are going to do alkyl shift. Usually methyl shift, that is CH3. And the last case is if the carbon adjacent to carbocation belongs to 3, 4 or 5 membered ring, then what you have to do? Ring expansion. फाइव डिग्री में यूजुअली नहीं होता, 5 डिग्री को आप छोड़ दीजिए, 3 और 4 पे ही लिखिए आप लोग, ठीक है। एंड दूसरी बात, सीबीएसई ने आज तक इसे सवाल पूछा नहीं है, लेकिन अगेन और एल्कोहल चैप्टर में तो डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, लेकिन अल्कोहल वाले चैप्टर में कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट डायरेक्टली सवाल एक है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज लास्ट क्वेश्चन देयर। ओके, सो पढ़ना जरूरी है, इसी वजह से ऐसा नहीं सोचिए कि एनसीईआरटी में कहीं नहीं दिया हुआ है, तो खोल के बहुत सारी चीजें एनसीईआरटी में नहीं दी रहती हैं, कहीं कहीं छुपी छुपी चीजें रहती है। तो वैसे ही आपका ये रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, इसीलिए जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है दैट इज नॉट फॉर स्टूडेंट, दैट इज मेनली फॉर टीचर्स, ठीक है, जिनको पता रहता है कि क्या पढ़ाना है। तो उससे आप एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन जितना एक टीचर को एनसीईआरटी पढ़ के समझ में आएगा कि क्या क्या चीजें हैं सिलेबस में, वो बच्चों को नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो ऐसा मत समझिएगा कि ये नहीं है चीजें, ठीक है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इन द सिलेबस। चलिए अब एक सवाल देखते हैं और अप्लाई करते हैं यहाँ पे कि प्रोडक्ट कैसे बनेगा। लेट अस हैव दिस मॉलिक्यूल लाइक दिस, वी हैव अ CH3 ग्रुप हियर and we have a Br group here, and we are reacting this with aqueous KOH. प्लीज याद रखिए ये बेंजीन रिंग नहीं, ये साइक्लोहेक्सेन या फिर 6 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है। नाउ रिंग देख के ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपके ऊपर बहुत सवार हो गया कि रिंग एक्सपेंशन करेंगे सर, यहाँ तो रिंग आ गया रिंग एक्सपेंशन करेंगे, ऐसा नहीं करना है। आप लोग आराम से जो स्टेप है प्लीज फॉलो ऑल ऑफ दीज स्टेप्स। ओके, लुक एट द कार्बन एटम एडजेसेंट टू कार्बोकेटाइन, इफ इट इज 1 डिग्री, ये बिल्कुल चूज दिस थिंग, you are going to get a carbocation something like this. Now you have two adjacent carbon atoms, the green one and the blue one. सही है, क्या सही है यहाँ पे? Tell me which one? Adjacent to carbon atom. This blue one is what degree? Tell me guys. This blue one is what degree? Blue one is what degree? 1 degree, 2 degree, 3 degree. Blue carbon is 2 degree. 1 degree, 2 degree. तो यहाँ से तो कुछ नहीं होने वाला है। What about this green carbon atom? What degree it is? 3. 3 degree. 3 degree में क्या होता है? Redshift. Hydride, है ना? And I think all of you must know that this particular green carbon atom it has a hidden hydrogen, है ना? क्योंकि 3 बॉन्ड बना रहा है, चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ होगा। Now this hydrogen is the one which is going to shift here, and you are going to get a positive charge on that 3 degree carbon atom. यहाँ पे CH3 था, and you are going to get a positive charge here. Okay, then further what is going to happen? The OH negative will come, it will attack here, and you are going to get something like this. ठीक है, तो OH नेगेटिव आएगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा, and you are going to get a product like this. ठीक है, what is happening here? Hydride shift, H shift. Let me know if you're done, guys. Acha, one question to you guys. When you guys get the assignment, let us say for example chemical kinetics के assignment आपके पास,
So can you access those assignments? Tell me guys. Sara, जैसे एक्सपायर हो जाने के बाद भी आप असाइनमेंट देख सकते हैं, शायद सबमिट नहीं कर सकते सर, है ना? देख Yes, सकते हैं। You can download the PDFs and all, right? Yes, sir. Okay. So किसका इंटरनेट फास्ट है? Can someone do me a favor and send me all the assignments for chemical kinetics? Like हमारे पास जो था वो करप्ट हो गया, वो हार्ड डिस्क. Who will do that for me? Assignments of chemical kinetics. Sir, should I send it right now? राइट नाउ नहीं, मतलब क्लास के बाद आप भेज दीजिएगा. ठीक है, I'll Okay, sir. send it. Okay. Thank you. I hope you have written all of these things. Now I'm going to move to the next topic. Please write elimination reaction. Yes, sir. 1 second, sir. Sir, हाँ लीजिए प्लीज. जी बताइए, कोई सवाल है या फिर सिर्फ देखना है? देखना था. अच्छा, क्लास है अहमद आपकी? Yes, sir. I'll leave in 2 minutes. अच्छा, Sir, can I leave, sir? हाँ sure, you can leave. Thank you, sir. Thank you. Okay, लिख लिया सारा आपने? Yes, sir. Right, next, elimination reaction. Please write what is elimination reaction. Right here, the reaction in which atoms or group of atoms of the substrate are removed from adjacent carbon in the presence of a base to form unsaturated compound is called elimination reaction. ठीक है, so जब भी आपके पास एक less unsaturated से more unsaturated की तरफ जाएंगे हम लोग, whenever we are going from less unsaturated to more unsaturated, that means we are doing a elimination reaction. For example, आपके पास एक केस हो सकता है इस तरह का, carbon atoms, here we have some X atom attached, here we have some Y atom attached, okay, and there are two more atoms, no matter what it is, in the presence of a base, and it also requires some kind of heat. When you are going to get this X and Y leaves, and you get a double bond carbon. The other two atoms, which are a group of atoms which are attached, that is as it is intact, nothing is happening there. Okay. Plus we have, you may have XY or some other thing also. It is not very
like generic thing कि x y ही मिलेगा आपको, but x and y both are removed from the adjacent carbon atoms. Okay, now here you are going from 1 degree to 2 degree. ये एक case हो सकता है. The other case can be also if you have something like this. So carbon double bond carbon. Here you have x and y in the presence of a base with some heat. You are going to get carbon. अभी एक single bond बचेगा and then you are having triple bond. Now this is also an example of elimination reaction because we are going from double bond to triple bond. So the unsaturation is increasing. So whenever the unsaturation increases, we see that it is an elimination reaction. Okay, between the carbon atoms. But please remember, elimination reactions और भी दूसरे cases के हो सकते हैं, लेकिन आप केस में हमेशा याद रखिएगा elimination reaction between two carbon atoms. If the unsaturation is increasing, that means if you are increasing the multiple bonds, then it is an elimination reaction. Got it, guys? Yes, no, please tell me. लिख लिया आप लोगों ने? Or if you wrote this also? Yes, sir. Okay. Now write next type of elimination reaction. Okay. जैसे आपके पास SN होता है दो केसेस में, उसी तरह से एलिमिनेशन भी हो सकता है. Please write here types of elimination. Now I'm not going into very much detail of this types of elimination because it is not there in your syllabus. You don't even have to remember the factors affecting the two cases. So we have E1 and E2 again. Unimolecular elimination, bimolecular elimination. In unimolecular elimination, there are two steps. First step is formation of carbocation. So for example, I have something like this. Here I have a hydrogen atom and here I have a halogen atom. Okay. Now in the first step, this halogen is going to leave and I am going to get a carbocation, something like this. Hydrogen, carbon, carbon, and there will be a positive charge here. Okay, this is a carbocation. The next is the cleavage of CH bond. When we have the cleavage of CH bond, we require a base. Now, what is the use of base? Base is something that is going to abstract a proton. Abstract proton means it is going to take away the hydrogen atom. And will take away the hydrogen atom. The hydrogen atom will leave its electron here. Okay, so base has it is what electron-rich species. Base is always electron-rich. It's going to attack on this hydrogen. Hydrogen is going to leave the electrons here, forming a double bond, and we are going to get C, double bond C, like this. Okay, now in E2, what happens? This whole process is single step. So we have the base. Now the base is attacking my hydrogen atom, abstracting the proton. So base is attacking the hydrogen atom. The hydrogen atom is leaving its electron here. Now the carbon cannot make 5 bonds. That is why it is breaking the bond with CX, leading to a formation of carbon double bond carbon. Okay, so these are the two types of E1. These are the two types of elimination reaction. Just write it in your notes. If it is not present in your head, that is also fine, but please write it in your notes. Okay, write it in your notes. Also, right? See, like both of these type of elimination, whenever you are having, this is the alpha carbon and this is the beta carbon, right? So from the beta carbon, hydrogen is getting abstracted. So this is also known as beta elimination. Both of these, okay? दोनों को ही क्या बोल सकते हैं? Beta elimination. Beta elimination reaction. Just Sarah, one question to you. How is the weather in Patna right now? Like ठंड आ गई है, नहीं आई है? कुछ आसार है? गर्मी है अभी भी. Like usually ठंड कब तक वहां पे पड़ जाती है? November end. Like November end तक you should have sweater and all, right? Okay. What about October end? November first week, second week? Nothing much. Nothing much. Okay. Something light like hoodie and all will work. Like अगर उतनी मतलब उतनी ज्यादा ठंड नहीं पड़ती, लेकिन
लिख लिया आप लोगों ने? yes or no please tell me. Yes, sir. Yes, sir. Okay, right. Next, some examples of elimination reaction. Now, we will see one of type of elimination reaction that is known as dehydrohalogenation. Dehydrohalogenation, in which what we are removing hydrogen and halogen. Okay, so that is why dehydrohalogenation. Now, there can be also one type of which is known as dehalogenation. Third, which we are going to learn in the next chapter, alcohols, which is known as dehydration. Dehydration का मतलब क्या है? Removal of water. So one atom will hydrogen will be removed from one atom, and from the other atom OH will be removed. So in total, what we are removing? H2O. Okay, so dehydration will be looking at in the next chapter. After you have written this, write the topic. Dehydrohalogenation. Please write here. When alkyne halide reacts with alcoholic KOH. Please remember, this is alcoholic KOH, and इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था, that was aqueous KOH. Alcoholic KOH, and in place of KOH, you can also use NaOH. Okay, that is also possible. Alcoholic KOH. Then it forms alkene via dehydrohalogenation. Write an example. You have carbon. There are two carbon atoms, and one has a halogen atom. The adjacent carbon should have one hydrogen. Okay, it should have one hydrogen. अगर hydrogen नहीं है तो फिर elimination reaction नहीं होगा यहाँ पे. And in the presence of aqueous KOH, sorry, in the presence of alcoholic KOH, ऐसे लिखते हैं alcoholic KOH. It is going to give me carbon with a double bond, and the other groups are intact as it is. So what is happening here? See, the CX bond is breaking, and what is breaking? The CH bond is breaking, right? And in place of this, the same carbon atoms which are having the CH and CX bond, between those carbon atoms, we are forming a double bond. So this is breaking, breaks, and this forms. CC में pi bond forms, please remember. CC का pi bond form होता है. For example, if I take a case like this, CH3, CH2Br, ठीक है? Now you have alcoholic KOH. What you have to do? See the first of all, कहाँ आपकी नजर कहाँ जानी चाहिए उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? It's about very simple step. सीधा इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा तो फिर आप लोग मिस्टेक्स कीजिएगा. Okay, so please remember how you have to look at the molecule. You look at the carbon atom containing halogen. Then you have to identify the adjacent carbon atom. Bas. Now from the carbon with halogen, remove the halogen. Adjacent carbon से hydrogen हटाइए. So if I will remove the hydrogen from adjacent carbon, this will be CH2. And then if I will remove the Br, then this will be also CH2. और इन दोनों के बीच में double bond. इसी तरह से बिल्कुल follow my steps like this only. Please do it like this only. Okay, for example, you have something like this: CH3, CH, CH3, and Br. First step: identify the carbon with halogen. Identify the adjacent carbon. Now here we have two carbon atoms which are adjacent, but both of them are same. I hope you now understand the concept of equivalent carbon atoms. Yes or no? Please tell me. Both of these CH3s are same. Yes or no? Yes, sir. है ना?
तो इसमें से किसी एक को भी आप ले लीजिए. Fine. Now what you have to do, remove the hydrogen from adjacent. This will be CH2, CH. Remove the Br. इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड and everything should be as it is. Wafia, are you getting this? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. So Okay. double bond we have to make between what? Between the adjacent and the carbon containing halogen. Okay. ठीक है, Yes, खुद sir. से ट्राई Thank you. कीजिए. ठीक है, खुद से ट्राई कीजिए इसको. Similarly, you can see if I have a Br group here like this. Identify the carbon atom. बिल्कुल मार्क कर करके कीजिए, सब कुछ आराम से हो जाएगा. Identify the carbon atom with halogen. Identify the adjacent carbon atoms. If they are seen, just take any one of them. यहाँ पे तो आपको हाइड्रोजन रिमूव करने की जरूरत नहीं, बिकॉज हाइड्रोजन हम तो शो नहीं कर रहे हैं. So in this case, what you just need to do is you need to remove this Br and form a double bond between both of those things. ठीक है, इसको ट्राई कीजिए. Also one more. अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि Br ही रहे. I don't know, I have this habit of writing Br everywhere. तो आपके पास आयोडीन भी हो सकता है. Okay? Alcoholic cleavage. चलिए, send the answer for these two on WhatsApp. Samya, can you please turn the mic on? Yes, sir. I'm explaining this one now, okay? Okay. I'm writing the number of carbon atoms. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. अब बताइए, which carbon atom contains the halogen atom? Tell me. कौन सा कार्बन One. आटम के पास? 1. आप अपने नोटबुक में भी उसको मार्क कर लीजिए. मार्क कर लिया आपने? Okay. Okay. And now you tell me, what are the adjacent carbon atom? Adjacent समझ में आता है आपको ना? बगल में. 1 के बगल में कौन कौन से कार्बन आटम है? टेल मी. 2 and 6. 2 भी है और 6 भी है. अच्छा, ये बताइए, अब ये दोनों सेम दिख रहे हैं आपको या अलग दिख रहे हैं? यू नो Same. दिस कंसेप्ट. सेम है ना? वेरी गुड. बस आपने सेम तो अब इसमें से किसी एक को भी चूज कर लीजिए. आप चूज कर लिया आपने, है ना? ठीक है. अब आपको क्या करना है? यू हैव टू रिमूव द हाइड्रोजन फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन आटम. रेड वाले से आपको क्या रिमूव करना है? हाइड्रोजन. एंड यू हैव टू रिमूव आयोडीन. तो यहाँ से आयोडीन हटा दिया आपने. हट गया ना आयोडीन? कैन यू सी द yes or no? Please tell me. मेरी आवाज नहीं आ रही है? हाँ, एक सेकंड. देख, आई एम सेइंग here you have iodine ना, you have removed the iodine. yes or no? Please tell me. Yes, sir. और अब यहाँ पे सिर्फ और डबल बॉन्ड लगा दीजिए.
हाइड्रोजन तो यहाँ पे हम लोग दिखा नहीं रहे, देयर आर 2 हाइड्रोजन बट वी डोंट इन बॉन्ड लाइन, ठीक है। तो उस केस में आपको हाइड्रोजन हटाने की जरूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन माय बैड गाइस, कौन है होस्ट? फातिमा, मेक मी होस्ट। यू डोंट नो हाउ टू। फातिमा, अच्छा आता है फातिमा को, थैंक यू फातिमा। ठीक है, साम्या आप समझ में आया आपको, या फिर हम कट गए थे बीच में? यस साम्या, टेल मी। Yes, sir. So, sir, we only have to make the double bond. हाँ, नहीं आपको समझ में आया कि नहीं, आप खुद बताइए क्या करना है, ठीक है। ये रट के तो नहीं जाना ना इसको, आपको समझ में आ रहा है ना। एक से हाइड्रोजन निकालेंगे और एक से क्या निकालेंगे, एक हाइड्रोजन को हटाना है, ये ध्यान रखिए, और दूसरे से किसको हटाना, हाइड्रोजन को। नाउ Hydrogen. हाइड्रोजन हट रहा है, यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड ट्राई Okay, कीजिए sir. आप, उसमें कुछ गलती होगी, जो भी आपको समझ में आ रहा है ना वो पता चल जाएगा जब आप आंसर लिखिएगा तो, ठीक है। तब हम बताएंगे कि आप क्या गलत समझ रहे हैं, क्या सही समझ रहे हैं। ऐसे रट के सिर्फ Okay. नहीं डबल बॉन्ड बना दिया, ठीक है। कीजिए कीजिए। हाँ रजान, सही है आपका आंसर, सही है। और उसके ऊपर वाले में आपने, हाँ ठीक है, वेरी गुड। ऐसे ही स्टेप वाइज कीजिए ऑल ऑफ यू। आइडेंटिफाई द हाइड्रोजन, हाँ सारा वेरी गुड, फाइन करेक्ट। वाफिया, हाँ वाफिया वेरी गुड। आइडेंटिफाई द थिंग्स एंड व्हेन यू आर डूइंग इट ना देन इट विल बी राइट ओनली, स्टेप वाइज। हाँ आप अब अगर टीचर से एडवांस बनने की कोशिश कीजिएगा, अरे ऐसा कहाँ देखा आपने फातिमा, इधर ऐसे बॉन्ड मत बनाइए प्लीज। फातिमा रिंग के अंदर रखिए बॉन्ड को, Yes, sir. ठीक है, ध्यान रखिए सब चीजों का। पढ़ा ही नहीं था क्या आपने 11th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? हाँ फातिमा, I did study. डिड स्टडी, पर आप लग तो नहीं रहा, आपको लग नहीं रहा आपने स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर कुछ भी बनाया था, ऐसा लग रहा है हम 11th क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं अभी। चलिए आंसर सही है आपके वैसे, ठीक है, आंसर सर फाइन। डन। सामिया आपने नहीं भेजा वैसे अभी तक। सामिया सेंड मी योर आंसर्स, इसी का भेजना है बस आपको, वैसे तो बीआर वाले का और इस ऊपर वाले बीआर का, दो का भेजना है आपको। Yes, sir, I'm sending. तुक्का मत मारिएगा, बता रहे हैं सामिया आपको, ठीक है, स्टेप वाइज कीजिएगा। ये इसका नहीं बनाया आपने, इस वाले का तो सही है, ठीक है, इसका तो सही है। मान लीजिए ये 1 है, सेकंड वाले का नहीं बनाया आपने, सेकंड वाले का बनाइए। बोल बोल के कीजिएगा सामिया, ठीक है, हम गलती पकड़ लेंगे नहीं तो आपकी, Okay, कि आप sir. तुक्का मार रहे हैं। हाँ
हाँ अब बताइए, तीसरा वाला सेकंड जो आपने किया वो गलत है, कैसे गलत है बताइए। सर डबल बॉन्ड डबल नहीं नहीं, आप दूसरी चीज देखिए। अच्छा, आपने जो तीसरा वाले में प्रोडक्ट बनाया उसमें कितने कार्बन आटम्स हैं यहाँ पे बताइए, तो गिन के बताइए। हाउ मेनी कार्बन आटम्स आर देयर फिफ्थ वाले में, ये हाउ मेनी, 5। यस और प्रोडक्ट में कितने कार्बन है? 5 5 ही है। अच्छा, इस वाले में देखिए क्या किया आपने, और गलती। 3 कार्बन आटम। हाँ तो फिर से एक बार ट्राई कीजिए, जो भी आपको गलती लग रहा है ना, कुछ तो कुछ गलत लगा आपको सामिया। यस हाँ उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए, फिर हमको भेजिए आंसर। बस अब ठीक है, एक और सवाल कर देते हैं आप लोगों को। फिर क्या लिख रहे हैं, चलो सीएल लिख देते हैं यहाँ पे। Send the answer for this, guys. Yeah, Sarah, that is fine, correct. रसान, हाँ रसान सही है। लेकिन ऐसा लग रहा है आप लोग अब ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं, मार्क वर्क नहीं कर रहे हैं। विच कार्बन आटम इज कंटेनिंग हाइड्रोजन, विच कार्बन आटम इज कंटेनिंग हाइड्रोजन। मार्क कीजिए प्लीज, ठीक है, आदत बनाए रखिए। सामिया, ठीक है, एक गलती है उसमें, क्या गलती है बताइए सामिया। सामिया, देयर इज सम मिस्टेक देयर, आइडेंटिफाई कीजिए क्या मिस्टेक है। कुछ तो पैटर्न से अलग लग रहा होगा आपको, दिखने में ही लग रहा होगा, जो भी आपने अभी तक प्रोडक्ट बनाए हैं उससे कुछ अलग लग रहा होगा वहां पे। या वाकई दैट इज करेक्ट। यस सामिया, कुछ पता चला? नो सर नहीं पता चल रहा है, ठीक है। अच्छा, प्रोसेस बताइए, हम कैसे बोलते हैं आपको करने के लिए। सबसे पहला स्टेप क्या है, टेल मी। हाइड्रोजन नहीं नहीं, साफ साफ, ठीक है, क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग वहीं से आएगी ना। बोलिए इसको अच्छे से, हिंदी में ही बोलिए पहले, जो आपको समझ में आ रहा है। first we identify the hydrogen आइडेंटिफाई दी हैलोजन, ये लीजिए आइडेंटिफाई कर दिया हैलोजन। yeah. then वो नहीं करते, ये कब किया हमने, हाइड्रोजन को आइडेंटिफाई किया कभी हमने? देखिए कहीं पे भी हाइड्रोजन पे सर्कल है, यू आर सेइंग इट रॉन्ग, फिर से बोलिए, क्या करते हैं?
we number it. नंबर एट, the अरे नंबर नंबर तो हम करते हैं पूछने के लिए आपको कि कौन से का। सबसे पहले मेरा सवाल कौन बताएगा, व्हाट डू वी डू द फर्स्ट थिंग, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट इज टू बी डन, प्लीज टेल मी गाइस। किसी को नहीं पता? फातिमा, सारा, रजान, व्हाट डू वी आइडेंटिफाई? Hydrogen, gaining halogen. हाइड्रोजन। The carbon connected to the halogen. वेरी गुड फातिमा। हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं सामिया, टेल मी व्हाट डू वी आइडेंटिफाई फर्स्ट? carbon Carbon? attached. फिर से बोलिए, once again, once again। Carbon attached to the halogen. ठीक है, अब कार्बन अटैच टू द हाइड्रोजन तो हम सही सही आइडेंटिफाई करेंगे। मान लीजिए ना आप टीचर रहती है, आप बोलती हाइड्रोजन आइडेंटिफाई करो, तो बच्चा तो ये करता। अब आप अभी आप बच्ची हैं और आप खुद को क्या बोल रही है, आइडेंटिफाई द हाइड्रोजन, तो आप किसको सर्कल कीजिएगा, इसी को सर्कल कीजिएगा ना। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, अभी सही सही आपने सवाल किया खुद से, आपने सही सही यहाँ पे ऐसे आइडेंटिफाई कर लिया। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट व्हाट डू वी आइडेंटिफाई? Adjacent एडजेसेंट carbon. कार्बन। वेरी गुड, एडजेसेंट कार्बन ये कर लिया हमने। ठीक है, एडजेसेंट कार्बन एकदम ही आपका, आई अंडरस्टैंड दैट 12th स्टैंडर्ड के बच्चे बिल्कुल ही बेवकूफ नहीं होंगे। हम जब बोलेंगे एडजेसेंट कार्बन को आइडेंटिफाई कीजिए तो ये कहाँ के एडजेसेंट नहीं पूछने वाले हैं, वो समझ जाएंगे कि ब्लू के बगल वाला। तो आप भी अब समझ जाइए ब्लू के बगल वाला जो एडजेसेंट कार्बन है उसको आइडेंटिफाई कर लिया। नेक्स्ट थिंग, Then we remove the hydrogen. नहीं 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 नहीं, आइडेंटिफाई कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन, ये पहला चीज करते हैं हम लोग। सेकेंड इज आइडेंटिफाई एडजेसेंट कार्बन्स। और जब एक से ज्यादा कार्बन रहते हैं देन आई वी आस्क अवरसेल्फ आर दे सेम। ठीक है, क्या पूछते हैं, पूछते हैं ना सामिया, नई चीज तो हमने नहीं बताई। ये सामिया प्लीज कीप योर माइक ऑन। Yes, sir. हाँ ठीक है, सामिया इज लाइक सर इतना छोटा सवाल के लिए नहीं, दिस इज एन अप्रोच दैट यू हैव टू नो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। आइडेंटिफाई कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन, आइडेंटिफाई द एडजेसेंट कार्बन, नाउ आर दे सेम, यस दे आर सेम, देन यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम। उसके बाद क्या करते हैं बताइए? Then we remove one hydrogen. रिमूव हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब अगर हाइड्रोजन को हटाएंगे तो ये जो ये क्या है, ये बॉन्ड है ना, दिख रहा है आपको? Yes. तो हाइड्रोजन हटेगा तो कार्बन के साथ तो बॉन्ड भी तो हटेगा, कि नहीं हटेगा? हाँ सामिया, Yes, sir. तो आपको ये बनाना था ये इस तरह से, तभी तो। अब यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे ऐसे डैश लगा दिया तो ये तो कार्बन एटम की तरफ सिग्निफाई हो रहा है ना, ये नहीं बनाना था आपको, और आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाना था। आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आप जब Yes, हटा sir. रहे हैं यहाँ से तो ये ऐसे हटेगा ना। ठीक है, वो बॉन्ड के साथ हटेगा ना, क्लोरीन जिसके साथ अटैच्ड है बॉन्ड के साथ हटेगा। चलिए Yes, sir. next question is, this is important, if you have something like this and you have a Br atom here, Br atom को हटाएंगे सामिया ना, तो ऐसे होगा Br atom को हटाने के बाद। ठीक है, ऐसे नहीं होगा, ये नहीं है, ये गलत हो जाएगा। बॉन्डिंग स्ट्रक्चर शायद आपने प्रैक्टिस नहीं किया ठीक है, बीच बीच में आती हैं आप तो क्लास, है ना, सोडा वाटर का जोश है आपके पास, चढ़ता है फिर खत्म हो जाता है, एब्सेंट करने लगती हैं। रिकॉर्डिंग देख के इतना समझ में नहीं आएगा कभी भी, ठीक है, क्योंकि हम तो उस टाइम रहेंगे नहीं ना रिकॉर्डिंग में, एक एक स्टेप बताने के लिए जहाँ भी गलती हो रही है, नहीं गलती हो रही है। ठीक है, इफ आई हैव दिस टाइप ऑफ केस, then in this first of all we identify the carbon containing halogen, then we identify the adjacent carbon. Now obviously both of these adjacent carbon, they are same or different, tell me guys? Different. Different, right? So we can make two products here. यहाँ पे आपके पास दो प्रोडक्ट बनेंगे, दोनों में हाइड्रोजन एटम निकालना है, and you have to remove hydrogen एक in one of the product from the red atom and from in one of the product from the green atom. So you'll get two products, one is this product plus you are going to get this product. ठीक है, now this is going to be minor,
दिस इज गोइंग टू बी मेजर। आप बोलिएगा क्यों, हम बोलेंगे नेक्स्ट क्लास। अभी प्रोडक्ट बनाने पहले सीखते हैं, उसके बाद विल अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज मेजर एंड व्हाई दिस इज माइनर। ओके, नाउ you write here the major product in dehydrohalogenation is the alkene with more number of alkyl groups around C double bond C. ठीक है, around C double bond C. Please write this. So this is the double bond. All if you can see that double bond, yes or no, please tell me guys. Yes, sir. Yes. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, it has only one alkyl group. बात समझ में आ रही है, yes or no, please tell me. डबल बॉन्ड के अराउंड एक ही alkyl ग्रुप है ना, दिख रहा है सबको? Yes, sir. हाँ, अब बोलेंगे दो कुछ लोग कि सर 2 कार्बन का है, 2 कार्बन, फाइन, ठीक है 2 कार्बन का है, लेकिन है तो एक ही ग्रुप ना। Yes or no, please tell me guys. It is only one group. Can all of you see the difference? It is, I'm not talking about the number of carbon atoms. You don't have to see the number of carbon atoms. You have to see how many groups are attached. So इस double bond के साथ आपके पास एक ही group है. But if you look at this double bond has this CH3 group here and there is another CH3 group here. So it has 2 groups. Can you see that? Yes or no, please tell me. Yes, sir. दिख रहा है सबको? Yes. हाँ, Sir. ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरह का, सामिया वगैरह का जवाब ही नहीं आता है, फिर वो डाउट पूछती है। सामिया अभी बताइए, समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे देखिए बी आर, ओके, यहाँ पे बी आर है एंड हियर यू हैव अ CH3 ग्रुप। आइडेंटिफाई द कार्बन कंटेनिंग हैलोजन एटम। डन सर। आइडेंटिफाई द एडजेसेंट कार्बन एटम्स। This carbon is adjacent and this carbon is also adjacent. Done sir. And are these same? No, they are different. So make Yes. both of them, है ना, make both of them. दोनों में डबल बॉन्ड एक एक करके लगाएंगे। सबसे पहले क्या कीजिए, बी आर को हटा दीजिए, बाकी सब कुछ एक जैसा लिख दीजिए। राइट इट एवरीथिंग एज इट इज। नाउ मेक रेड एंड ब्लू डबल बॉन्ड। ठीक है, एक ये प्रोडक्ट बनेगा रेड एंड ब्लू डबल बॉन्ड, और बी आर को बॉन्ड के साथ हटाना है सामिया। ठीक है, बॉन्ड के साथ हटाइएगा, और CH3 को मत भूल जाइएगा इधर बी आर को हटाने में। ठीक है, बाकी बच्चे क्या करते हैं, इसको भूल जाएंगे, CH3 नहीं लिखेंगे। अरे नहीं, CH3 तो रहेगा ना, CH3 इज एज इट इज, नथिंग इज हैपनिंग हियर। तो मेक द स्ट्रक्चर एज इट इज विदाउट द बी आर। एक ये प्रोडक्ट रहेगा, दूसरा प्रोडक्ट रहेगा आपके पास कुछ इस तरह से। you'll have this product, बी आर तो हट जाएगा यहाँ से, there will be a double bond here and CH3 group here. ठीक है, now we have made the double bond in both the adjacent carbon atoms, and now you tell me which is major, 1 or 2. कहाँ पे ज्यादा अल्काइल ग्रुप दिख रहा है आपको डबल बॉन्ड के अराउंड? नहीं पता सर, हमको तो दिख ही नहीं रहा है जी। सारा 2 में। व्हाट अबाउट अदर्स, टेल मी, कहाँ पे अल्काइल ग्रुप ज्यादा है? कैसे देखे सर, दिख ही नहीं रहा है सर। देखिए बताइए, ये 2 ब्लू से कितने बॉन्ड निकल रहे हैं? डबल बॉन्ड को छोड़ दीजिए, बाकी कितने बॉन्ड निकल रहे हैं बताइए। इन दोनों ब्लू से तो- कितने बॉन्ड निकल रहे हैं, है ना? ये एक तो- ब्लू यहाँ से निकल रहा है और यहाँ से एक निकल रहा है। दिख रहा है सबको? यस और नो प्लीज टेल मी। दिख रहा है सबको, हाँ या ना? Yes. Yes, sir. सेम चीज यहाँ पे बनाइए इस तरह से। अब बताइए, इन दोनों ब्लू से कितने बॉन्ड निकल रहे हैं? 3 bonds. 3 निकल रहे हैं ना? Three. तो 3 अल्काइल ग्रुप है यहाँ पे। दिख रहा है सबको अब? कैन एवरीवन सी दैट? यस और नो प्लीज टेल मी।
Yes, Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। चलिए बनाइए, एक सवाल कीजिए। सो दिस विल बी माइनर। सामिया, Yes, आया sir. आपको या एक और समझाएं या फिर आ गया आपको? Sir, आ गया। पक्की बात? Yes. चलिए, अच्छा यहाँ पे तो ऐसे ही तो नहीं होगा, अल्कोहलिक पीएच लिख दीजिए, अल्कोहलिक पीएच लिख दीजिए यहाँ पे। और प्लीज इस क्लास को ना प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये कम से कम ये वाला पार्ट जो है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन वाला, ठीक है? क्योंकि आपको तो पता ही है, आप जब आइएगा वेंसडे के दिन तो सबसे पहले हम आपको सवाल देंगे करने के लिए, फिर आप लोग बिल्कुल गंदा गंदा आंसर दीजिएगा, फिर हमको समझ में आ जाएगा कुछ पढ़ नहीं रहे हैं आप लोग। और यही अगर चलता रहा रिवाज आप लोगों का, तो एग्जाम के दिन भी वही होगा, जैसा आप फील करते हैं ना, पहुंचते हैं क्लास में सवाल मिलता कुछ नहीं आ रहा होता, वैसा ही फील कीजिएगा आप लोग एग्जाम के दिन भी, ठीक है? तो ट्राई कीजिए रिवाइज करने का, एलिमिनेशन रिएक्शन से ही सवाल देंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, जिन लोगों ने 11th में ऑर्गेनिक पढ़ा है कहीं पे भी, उनको थोड़ा सा तो आसानी होगा कि दे विल बी कंफर्टेबल विद द स्ट्रक्चर्स एटलीस्ट, कि दे वुड नो हाउ टू रिमूव थिंग्स, हाउ टू नॉट रिमूव थिंग्स। फातिमा, आपको याद है आप भी पहले इस तरह की गलती करती थी? जैसे यहाँ से हम बोलते थे बी आर हटाने के लिए, तो आप इस तरह से बी आर हटा देते थे। ये सुनो फातिमा, आई थिंक यू हैव yes, आल्सो डन दिस, है ना? आई मीन इट्स काइंड ऑफ होता है ऐसा, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है। फातिमा आप नहीं गलती कर रही है ये सब, ठीक है? मिस्टेक कीजिए, दैट इज नॉट एन इशू। अभी मिस्टेक कीजिएगा तो एग्जाम में वो सारी मिस्टेक्स नहीं होंगे, है ना? और हिम्मत मत हारिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होगा, सवालों का जवाब नहीं आ रहा होगा, बहुत ही आसान आसान चीजें छूट जा रही होंगी, लेकिन एक दिन का खेल नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस वजह से भतेरे चैप्टर है बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, राइट? या फ्रॉम हैलोअल्केन टू अमीन्स। हैलोअल्केन में नहीं आया कुछ, वो अल्कोहल में आएगा। अल्कोहल में कुछ नहीं आया, थोड़ा बहुत जो बच जाएगा वो आपको एल्डिहाइड कीटोन्स में आएगा। एल्डिहाइड कीटोन्स में भी नहीं आया तो अमीन्स में आएगा। आप तब तक तो सब कुछ आ ही जाएगा आप, ठीक है? तो हिम्मत मत हारिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एक स्टेज समझ के रखिए, ठीक है? हाइड्रोअल्कीन पे ऐसा मत समझिए ये एक अलग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, अल्कोहल फिनॉल्स में अलग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सब में एक ही चीज है, इलेक्ट्रॉन सोर्स, इलेक्ट्रॉन सिंक। And what you have learned here, for example, Markovnikov, anti-Markovnikov, same anti-Markovnikov and Markovnikov is also there in alcohol phenols either. Abhi, whatever you are learning about the elimination reaction here, similar type of reaction is there in alcohol phenols also, ठीक है? So यहाँ पे अभी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, उतना सही से अगर नहीं आया तो अल्कोहल में फिर से आएगा ये चीज, वहां पे और प्रैक्टिस होगी तो फिर और क्लैरिटी होगा आपको। एक चीज आप लोगों को हम बताते हैं, देयर इज समथिंग व्हिच इज नोन एज द हायरार्की ऑफ कॉम्पिटेंस or competence, whatever you do. आंसर भेजा कुछ लोगों ने, आंसर बता दें, लेकिन ये देखिए आप लोग, कॉम्पिटेंस का मतलब पता है ना? यू नो द मीनिंग ऑफ कॉम्पिटेंस? कॉम्पिटेंस का मतलब नहीं पता क्या? कंपटीशन नहीं होता है इसका मतलब, ठीक है, कि compete करना किसी में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्पिटेंस? टेल मी। हाय हाय, कोई काम आप कितने अच्छे से कर सकते हो, ठीक है, दैट इज नोन एज कॉम्पिटेंस। जैसे मम्मी लोग खाना बहुत अच्छा बनाती है, तो उनको उस चीज में कॉम्पिटेंस है, दे आर कॉम्पिटेंट, वी से दैट दे आर कॉम्पिटेंट, ठीक है? जैसे फिजिक्स के टीचर है, वो फिजिक्स में अच्छे होंगे, दैट मींस ही हैज अ कॉम्पिटेंस ऑन, ही इज कॉम्पिटेंट ऑन फिजिक्स।
तो उसके हायरार्की होती है, लाइक हाउ कॉम्पिटेंट यू आर. द फर्स्ट लेवल दैट मोस्ट स्टूडेंट्स, लाइक एवरीवन स्टार्ट्स हियर ओनली. अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस. इनकॉम्पिटेंस का मतलब आपके पास एबिलिटी भी नहीं है और आपको पता भी नहीं है. ओके, यू डोंट हैव दी कॉम्पिटेंस एंड यू डोंट इवन नो इट, कि आपको पता भी नहीं कि आपको नहीं आता है. तो पीपल मेजरली स्टार्ट हियर. देन देयर इज कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस. आपको पता है कि आपको नहीं आता है, ठीक है. जैसे सवाल दिया हमने, तो जिस बच्चे को थोड़ा सा पता होगा ना, वो सवाल को नहीं करता, बोलेगा कि सर नहीं आता. जिसको कुछ नहीं पता होगा वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा. जिसको कुछ नहीं पता वो यहाँ पे कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा, उसको पता भी नहीं है. एंड दैट इज व्हाई ही इज हैविंग रॉन्ग इंट्यूशन. यानी ही इज मेकिंग द प्रोडक्ट बट दैट इज गोइंग टू बी रॉन्ग. इन कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस ही विल नॉट नो वेयर टू लुक. जैसे हम बोलते हैं ना, कार्बन पे यहाँ पे देखिए, कार्बन के वहां पे देखिए, फिर उसके बाद एडिशन कार्बन. तो उसको एनालिसिस नहीं पता होगा कि क्या क्या करना है, ठीक है. अब आपका जो लेवल होना चाहिए, लाइक व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग समथिंग, जब हम आपको सिखा चुके हैं घर में जाके आप जब रिवाइज कर रहे हैं, तो आपके पास ये वाला लेवल होना चाहिए, कॉन्शियस कॉम्पिटेंस. यानी कि आपके पास एबिलिटी है किसी चीज को परफॉर्म करने की, रिएक्शंस को कंप्लीट करने की, प्रोडक्ट को बनाने की, बट that is a conscious competence. That means you have to put in some effort. You have to start with identifying the carbon atom that is containing halogen. Then you are identifying, so you are putting in efforts, right? So that is what conscious competence is. Now once this is completely done, then you will achieve a level which is known as unconscious competence. यानी कि आपका जो intuition है, that is going to be correct, and that is majorly what teachers achieve after a very long time. Even when you are giving examination, तो आपके पास you will be somewhere between here. Okay, तो आपको आप कभी भी ये मत सोचिएगा ना कि मेरा इंट्यूशन सही है हमेशा. You always follow a pathway, you always follow an algorithm, कि ये स्टेप फिर ये स्टेप फिर ये स्टेप. अगर जैसे ही आप थोड़ा सा भटके, आपको लगने लगा कि हमको आ गया, तो फिर आपके पास एक एग्जाम्पल होगा जहाँ पे आप गिर जाइएगा, जो आपको नहीं आता होगा. तो ऑलवेज ट्राई टू फॉलो एंड ऑलवेज ट्राई टू बी हियर ओनली. ठीक है, अभी आपका जो फेज है ना, दैट इज हियर ओनली. और आपके पास जो क्वेश्चन पेपर भी बनते हैं वो भी इसी तरह से बनते हैं कि आपको इतना टाइम दिया जाए दैट यू कैन वर्क ऑन दैम. वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपको कुछ सवाल को देखते साथ आंसर आ जाए. जैसा मोस्टली टीचर्स को देखिएगा, सवाल देखते साथ वो बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है, बट दैट इज नॉट योर केस. आपको इसी रियल में रहना है. यू हैव टू बी हियर ओनली, कॉन्शियस कॉम्पिटेंस. ठीक है, यू हैव द राइट एनालिसिस एंड देन दैट इज व्हाई यू आर गोइंग टू गेट द राइट इंट्यूशन आफ्टर दैट राइट एनालिसिस. आप टीचर्स को एनालाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है. ओके, चलिए. डज एनीवन हियर प्ले चेस? किसी को चेस खेलना आता है? चेस देखता है, चेस खेलता है कोई? Yes, sir. दो लोगों का माइक ऑन हुआ. सामिया, यू Yes, प्ले sir. चेस? Yes. अच्छा, प्ले इन द सेंस और कौन है? दो लोग यस बोल रहे हैं क्या? फातिमा, यू आल्सो प्ले चेस? Sometimes. समटाइम्स. ओके, तो सामिया यू प्ले चेस लाइक, मतलब कहाँ पे, chess.com पे, या फिर कैसे खेलती हैं आप, या कभी कभी खेलती हैं? बिल्कुल. No, sir. With my siblings. With your Sometimes. sometimes. तो like you know some things like opening होता है, end game होता है, नहीं? Yeah. You know these things? एक Yeah. लंदन सिस्टम नाम, अच्छा, देयर इज अ लंदन सिस्टम नाम टाइप का ओपनिंग होता है. E4 D4 पॉन वाला ओपनिंग होता है. यू नो दीस थिंग्स? Yes, sir. हाँ, पता है? No, sir. अच्छा, ये नहीं पता है आपको, ठीक है. आप चेस देखती हैं? लाइक डू यू वॉच पीपल प्लेइंग चेस? लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे विश्वनाथन आनंद थे इंडिया से, मैग्नस कार्लसन है अभी, विदित गुजराती है. नो. No.